Hour Special Edition. Hello and a very warm welcome. You're watching the News Hour Special Edition. It's been 7 days since BJP won the People's Mandate in 3 Hindi heartland states. And today, the Saffron Party has finally ended suspense over their chief ministerial face, at least in one state. And this was the state that was being considered the easiest decision to make. Vishnu Dev Sai has been anointed the first ever tribal chief minister of Chhattisgarh. Remember, the decision to pick Sai as the next CM face is significant in the run-up to 2024 for many reasons. The state of Chhattisgarh has 11 Lok Sabha seats and an over 30% tribal population. In the recently concluded elections, 46% of this vote bank had gone with the BJP, and across India, they constitute a 8.6% of voters, and 49% had decided to rally behind the BJP in 2019, which was a significant rise from 38% in 2014. It is these numbers that the BJP will be looking to build on going ahead next year. Top BJP leaders, including Sai himself, hailed the decision. भारतीय जनता पार्टी वास्तव में आदिवासी कौम की चिंता करती है। कांग्रेस तो जबकि आज बोलना हालांकि नहीं चाहिए इस अवसर पर, लेकिन खाली वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल की है। लेकिन अगर आज देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, उसमें भी हमारे समाज की किसी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बैठाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही बैठाई है। उनके उत्थान के लिए भारत सरकार में अगर आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन हुआ है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। तो हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हम लोग की हितैषी पार्टी है। And now that the suspense is over in Chhattisgarh, the spotlight has firmly shifted to Rajasthan and Madhya Pradesh, and reading between the line is on fervently. In reposing its faith on a tribal leader, BJP has sent several hints for the other two states, giving rise to multiple speculations. Will there be a new face as CM in Rajasthan and Madhya Pradesh as well? Will the four castes that the Prime Minister says matter to him are high on his priority list all get representation at the helm in Hindi heartland states? Sources are telling Times Now that the BJP is preparing to name some new chief ministers in the other two states as well. There are several other questions, the answers to which are now going to be provided to us by our guests who are joining us. Shehzad Poonawalla, national spokesperson from the BJP, is with us. Sameer Chowgaonkar, senior journalist. Sir, welcome to the broadcast. Nikhil Jain, political consultant, and Vivek Srivastav, political analyst. First up, coming to you, Shehzad. Now, the messaging that the BJP is trying to send by picking a tribal leader is not just limited to Chhattisgarh, is it? You see, first of all, let me use this platform for thanking the Chhattisgarh BJP Vidhayak Dal for actually electing somebody who has worked right from a Sarpanch level, then MLA to MP, was a minister. He was also in charge of the party in Chhattisgarh. And this is the kind of persons that get positions under the Modi government, because for Modi government, Sabka Saath, Sabka Vishwas, Sabka Vikas and Sabka Prayas is not an empty slogan. For Prime Minister Modi, whether it is making the tribal daughter Adivasi Beti Draupadi Murmu ji the president, whether it's celebrating Bhagwan Birsa Munda's Jayanti as Janjatiya Gaurav Divas, whether it is creating 10 tribal freedom fighter museums, whether it is increasing the funds of the ST community, or whether it is actually giving them stake in the development of the ST areas. This is what Prime Minister Modi has done over the last 9.5 years, and therefore today what we are seeing, the first tribal chief minister of Chhattisgarh, is just a continuation of that process of Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas, and it goes beyond just lip service of saying jiski jitni sankhya bhari utni uski hissedari. If Congress truly believed that, why didn't the Congress ever empower any tribal leader? Why didn't they make a tribal a president? Why didn't they make a tribal any position in power in government? So there's one person, Rahul Gandhi, who gives lip service. On the other hand, Prime Minister Modi delivers that, and the Bharatiya Janata Party delivers that, and that's the difference between the two. Vivek Srivastav, it is the difference between promise and delivery, and that is also the difference between the party that wins those elections. Yeah, see, I'll tell you, the party which does not give even a single seat in Lok Sabha from UP to any Muslim candidate, they are talking of equal representation.
See, basically, this is a compromise candidate, and I'm telling you, sure shot sabotage and infighting in BJP is going to, come out. However, our best wishes that good performance happens for the betterment of the nation. Okay, and they are so scared of the caste census and other betterment and welfare activities that the INDIA constituents have started in their respective states, that now they are trying to show that, look, we are also, sort of trying to do something. So it is a lot of makeover, a lot of paint work happening, but however, the reality of the wall, which is already broken, is already exposed. We know BJP is a party which stands for Brahmanical supremacy and Hindu supremacy, their concept of Hindu Rashtra, their way of governance, their way of running the... Mr. Srivastava, would you like to qualify your statements with examples? Adivasi or... Yes. So would you like to qualify your statements with examples? Recently, there was a big... I'm telling you, they run their shakhas from temples. They are not willing to they use the resources of temples to run the RSS shakhas. And they believe in what the so-called, and the moment anybody starts questioning Hindu texts from a very, discursive point of view also, they suddenly start reacting. Okay, Shehzad, the hypocrisy is does not lie in the opposition's promises and lack of delivery, but in the BJP's words. You have somebody like Samir Chaugankar on this panel. Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh. Every tribal area has been won handsomely by the BJP, and they are saying that the tribal people don't know what is good for them. Vivek Srivastava will tell what's good for the tribal people. This is the patronizing attitude which the tribals don't want. Point number one. Point number two, while we were making Rashtrapati Draupadi Murmu, which side were you on, Vivek Srivastava? Can you please elaborate? And point number three, as far as the Muslim point is concerned, please tell me 3 Muslim spokespersons of this party. Forget MP. Can you name 3 Muslim spokespersons? I can talk about myself, Shazia and Syed Zafar Islam. Can you name 3 spokespersons of your party? 3 Muslim spokespersons. Do you? How many? 3 Muslim spokesperson bata do apni party ke bhai. No, how many Muslim? 3 Muslim spokesperson apni party ka batao. Do you know that? Do you know there was... No, the problem with this Muslim narrative is, let me just solve this once and for all. The Muslims, Vivek ji, don't interrupt me. I had not completed. The Muslims are most prosperous in Gujarat and the least prosperous in Bengal, where you ruled for 34 years. This is the difference. You pay lip service and divide. Modi ji does work and unites. Okay, Samir Chaugankar, let me bring you in. As a neutral party here, do you think that this formula that the BJP is seem to be working on can successfully foil the PDA narrative that is being peddled now? Mr. Srivastava also said that this is just because BJP is afraid of the caste census mastercard that has been played by the India allies and the Congress party in particular, that BJP is just reacting to by doing such things because they were forced to do such things. देखिए, राहुल गांधी ने जो आरक्षण की सर्वे की जो बात की है, पिछड़ा ओबीसी सर्वे की जो बात की है, मेरा एक है ना, उसके पहले से प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जब सत्ता में आए थे, उसी समय से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते रहे और सभी वर्गों के लिए उन्होंने काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को ना ही अखिलेश के पीडीए से डरने की जरूरत है, ना ही राहुल गांधी के ओबीसी के सर्वे से डरने की जरूरत है। आज आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी हिस्से के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं और यह बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी की योजना है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए। आज हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि मुस्लिम कितने वोट दिए यूपी में। मैं ये कहना चाहता हूं कि एएमयू के वाइस चांसलर को एमएलसी किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मंत्रालय की 72 स्कीम्स अल्पसंख्यक लोगों की चल रही है। हज में कोटा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में चलते हैं। आज अगर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी आदिवासी को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया, तो इसका मतलब यही नहीं कि आदिवासी वोटर्स के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी देश के राष्ट्रपति को आदिवासी बना चुकी है, एक दलित को देश का राष्ट्रपति बना चुकी है। हर वर्ग के प्रधानमंत्री मोदी लेके साथ चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इस पूरे देश का विश्वास प्राप्त है और इसी कारण प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है, तो देश का हर वर्ग, समाज का हर तबका प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि देश में सिर्फ 4 गरीब जात है, एक नारी शक्ति, एक युवा शक्ति, एक किसान
और एक गरीब, इन 4 लोगों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये 3 चुनाव बताते हैं कि 2024 के परिणाम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। निखिल जैन, वादे तो बहुत किए जाते हैं बट बिकॉज उनकी डिलीवरी नहीं हो पाती है। राहुल गांधी सारे स्टेट में जाके बोलते हैं हम कास्ट सेंसस कराएंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उनकी जो एक सरकार ने कास्ट सेंसस कराया भी है, वहां पर भी दे डोंट ब्रिंग इट फॉरवर्ड। इज इट दिस डिस्टेंस बिटवीन promises and delivery, this tokenism that the people have now seen through, and which is why the electoral results that parties see? Priya, first of all, there's a difference between a caste census and a caste survey. Whichever state government conducts it, whether it is Karnataka or some other government, that's a caste survey and not a caste census. Secondly, in order to actually give the benefits to the OBC communities by the mode of a caste census, you need to actually have a caste census, which is the demand of the opposition. And it is certainly not. Sir, you have a caste census in Karnataka. What happened? Disparity between delivery. It is certainly not a who got disparity justice between from delivery the and caste promises when census we that talk was about the conducted in Congress state Karnataka? government. There is caste census, caste survey, caste counting, So whatever that is you what would I'm like to saying. call That is it. a caste survey. That's no. Yes. There is a difference between a survey and a census. A survey cannot be as accurate as a census is, and therefore अरे for सर, but accurate जो- policy अरे सर, planning, but for accurate जहाँ- and direct transfer of benefit, Shehzad, you want census. to come in on that? Okay, one second. One your second. voice Let me is unpack breaking this. Nikhil, let me unpack this. You're right. Bihar did a caste survey. In Karnataka, you've done a caste survey. Why aren't you revealing the figures? In Chhattisgarh, you did it. Why aren't you revealing the figures? And in Odisha, you opposed Mr. Naveen Patnaik's government proposing a caste survey, by the way. And caste census जब 2011 में किया था, 2014 तक रिपोर्ट ही नहीं निकाली आपने, पर छोड़ देते. That is not the issue. You know what is the real PDA? The real PDA is not Pichhda, Dalit, Adivasi. It is Parivarik Dynasty Alliance. Outside Mulayam Singh Yadav family, they don't find any Yadav. Outside Lalu Yadav family, they don't find any Yadav. And outside DMK's first family, Stalin family, they don't find anybody. They are giving Jativadi Avaran to actually what is Parivarvad. They don't even care for the Jati. Otherwise, after Mulayam Akhilesh, after Akhilesh Dimple, after Lalu Rabdi, after Rabdi Tejaswi, वाह भाई वाह, क्या गजब के आपने सोची है भाई पिछड़ों के Who लिए. did you make the? क्या गजब की सोची है. और उल्टा सोच सुनिए. अब निखिल जी सुन लीजिए. अब सुन लीजिए निखिल जी, सुन लीजिए. अरे भाई एक आखिरी वाक्य, आखिरी वाक्य निखिल जी, आखिरी वाक्य. Is he not the अरे son? आखिरी वाक्य, आखिरी वाक्य सुन लीजिए. Is he not the son of सुन B.S. लीजिए भाई, Yediyurappa? सब सुन लीजिए. Who The is Piyush BJP, Goyal? since it's come into Is he not the existence, son of the erstwhile we can speak treasurer one of at the a time, BJP? Nikhil. We can speak one at a time. I'm speaking. The BJP, since it's come into existence, has given 30% CMs as OBCs, and not from same caste also. You see Kalyan Singh, you see Modi ji, you see Shivraj Singh Chauhan, you see Uma Bharti ji. You see different castes have also got representation, not just the dominant one. So therefore, I'm saying even on this pitch, like Samir Chaugankar ji said, he's rightly saying, ये हमें सिखा रहे हैं. अरे हमारे मन में मंडल और दिल में कमंडल है. ये क्या हमको सिखाएंगे? Yes, please go on. Mr. Jain. आपके दिल में भी आपके जेएनयू में सिर्फ बंडल है. आपसे बंडल में फोकस कीजिए. वो बंडल निकल रहा है सब. बंडल Shehzad, first of all, just Vivek ji, just a second. Shehzad, first of all, clarify whether you are in favor of a caste census or not, because the BJP in Bihar likes to be in favor of a caste census and a caste survey. You seem to be listing out points how you are offering representation to the OBC communities by having. Can I answer your question, Nikhil ji? The Prime Minister talks about 27 of his ministers being OBCs, so you'll have to first answer whether you're for it or against it. You can't have it both ways. Okay, I'll answer in 10 seconds. Don't Please interrupt do. me. Thank you. Till 1931, we conducted caste census. Which Prime Minister stopped the caste census in 1951? Can we stop going to history of 70, 80 years ago? This Okay. One second. It's fine. I'll give you question two. We are talking about the Congress party, which is, wait a minute. No. Let me respond on that. We are not playing आप KBC दूसरा वाला भी तो quiz. सुन लीजिए, फिर साथ में रिस्पॉन्ड Shehzad, we are not playing Bonvita quiz here. Let me respond. Let me respond on INC का that. social Which media तो party was देखिए. it that gave land to the peasants and tillers, landless peasants and tillers? Shehzad, which party was it that gave land to the landless That's tillers not and the answer peasants? to the question I asked. Who stopped the caste census was the question I asked.
Its answer is Nehru ji. No, I have asked Option you a A, different Nehru. question. Since अच्छा, you're anyways. saying Bonvita अरे quiz, भाई, you ask me a question, I'll you ask ask you a me question. Bonvita type question कि आप बताओ stand क्या है आपका, आप सुन लीजिए. Question 2. In Priya, that's a lot of 1979, echo, if you अरे could sir please please, get that. 1979 Mandal report came. Which prime minister stopped Mandal report implementation in 1980 and 84? Question number 2. Question number 3, who got up in parliament and opposed VP Singh when the Mandal report was being implemented? Question number 4, which party's slogan was ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर. अब बोल दो सब चीज को लात मार के कि हाथ पर नहीं, ये जात और पात में ही बांटना है. कौन बोल रहा है? ये आपकी विरासत है. जवाहरलाल नेहरू, राजीव जी, इंदिरा जी, सबको मतलब उनकी विचारों को कूड़े के दान में डाल दिया क्या आपने? Let's talk about 2023. तो बताइए फिर आप Right. 50 साल पुराना क्यों आइडिया दे रहे Let's talk about हो? 2023. 50 साल पुराना आइडिया तो आप दे रहे हो कि देश को बांटो. तो मैं तो 50 साल पुराना आइडिया दे ही नहीं रहा. I'm talking Let's move about, on. Let's talk about 2023. You first make a stance clear whether the BJP is for a caste census or whether it is against. अच्छा चलो, one more question. First, let's For be very sake of clear. audience, one more question. One quick question, One then last we need to question. move on from One this. last About the question. present and let's talk about the future. निखिल जी, आपका वो ठीक है. मैं एक और, हमारे प्रधानमंत्री का नाम है ओबीसी प्रधानमंत्री है मोदी जी, हमारे अलायंस का. आपका कौन है? कास्ट सेंसस छोड़ो ना, पोजीशन ऑफ पावर की बात करते हैं. वी आर गिविंग प्राइम मिनिस्टर मोदी ओबीसी. आप कौन दे रहे हो? You are just deflecting and deviating, Shahzad. You're अरे just deflecting. No, सारी चीजें no, तो so- पावर so- के लिए है ना. ओबीसी को पावर मिले, ओबीसी को पावर दे रहे हैं हम, प्रधानमंत्री बना रहे हैं. Is your बताइए, party for OBC reservations or is it against? ओबीसी No, but- रिजर्वेशन कहां से आ गया? आप कास्ट See, सेंसस your में party रिजर्वेशन है. absolutely excels in symbolism, but I am on the simple point. Ideologically, अच्छा चलिए, one more last question. Audience की, Guys, we really need to move on from this quick fire. Yes, last question. Last question. Please, Last quickly. question. Last That's question. the point, Priya. निखिल जी, He's last going question. to keep on playing अरे Bonvita निखिल quiz जी, मैं master. नहीं कर रहा I हूँ. think you आप should meet देखिए, Derek आप भी अपनी O'Brien. He would स्थिति ऐसे- love Let's, your question, Shahzad, quickly, then we'll move on. Yes, please, It's please, not please. Bonvita quiz. Answer अच्छा, forget a Bonvita specific quiz. question. Last- Is your party in निखिल जी, favor of stop the caste interrupting. census or not? अच्छा ठीक है. No, निखिल no, जी, no. last. Is your party in favor of the Bonvita quiz? Yes or no? You ask me a quiz question, I'll ask you a rapid fire. ठीक है? Sir, in Bihar, Let's play coffee BJP with has Karan hai. even Amit Shah Is your today party spoke for about caste caste census. They or said is Amit Shah today spoke about caste census in Bihar. He said, yes, my party has supported the census and the survey. My only problem is that the process wasn't right. But that is not the point of discussion. The point of discussion here is that when Congress says something, it makes big promises, but when it comes to actual delivery, they fall short. And which is why the big question today that has been put forth is Priya, that... No. They have Can I delivered just in make Karnataka, one they small delivered in intervention on Rajasthan, this? and they Let me delivered in prove Chhattisgarh. this. We'll come to Samir Chowgankar after this. Yes, please, 10 quickly, seconds. Shahzad, please. We won 3 state elections. The Congress won. They had a chance to put their OBC thing into place. Who did they make CM of Telangana? Revant Reddy, who abuses the Kurmi Samaj. रेवंत रेड्डी को क्यों बनाया भाई? Why not Malla Bhatti Vikramakar? One second, Nikhil, you are interrupting now. Nikhil, stop interrupting. Okay, Nikhil, stop let's end this now. We'll give both our Why guests not? some time 5 to seconds. calm down. 5 Let me bring. 5 seconds. You've made your point, Why Shahzad. not the You- Dalit leader Malla Bhatti Vikramakar in Telangana? Why Revant Reddy, who abuses OBC? Why that? Walk the talk, ना boss. हमने वॉक द टॉक किया. आदिवासी को बनाया मुख्यमंत्री, आदिवासी को बनाया राष्ट्रपति. आपने क्यों नहीं किया? You asked me a question. No. You asked me a question. Let me at least answer. Arey Baba, let me answer the question that you've posed, because the Congress went with a face in the election. Unlike the BJP, where the only faces of Prime Minister Modi as if he's going to descend down from You the didn't Prime declare him Minister. as the face. Okay, But Samir declared Kamal Nath Chowgankar as the face. as a senior journalist जो कि राजनीति को बहुत closely देखते हैं और परखते हैं. Let me get the guest. Please, we'll get a non-political voice. We'll give you a chance to calm down your tempers, both Shahzad and Mr. Jain. Mr. Chowgankar, do you think that the allegations that is being made against the BJP is valid? That in BJP सारा वोट तो मोदी जी के लिए पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कास्ट मैट्रिक्स में गोटी बिठाने के हिसाब से किसी को भी पिक कर लेते हैं जो उनको सूट करता है. वो किसी की भलाई के लिए काम नहीं करते हैं सिवाय अपनी पार्टी के और मोदी जी की इमेज के. देखिए जी, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस इतने साल रहने के बाद भी, भारतीय जनता पार्टी जो 1980 के बाद से बनी है, लगातार संघ, संगठन और सरकार
भारतीय जनता पार्टी के तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन को कांग्रेस पहचान नहीं पा रही है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़ा चेहरा है, अटल बिहारी वाजपेयी भी उसके पहले भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़े चेहरा हुआ करते थे, लेकिन संगठन जमीन स्तर पर काम करता है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे लोग अपील करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो काम है वो जमीनी स्तर पर कौन पहुंचाता है? संगठन पहुंचाता है। 3 राज्यों में जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा मुख्यालय से क्या कहा था कि यह संगठन की जीत है, यह टीम वर्क की जीत है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर यही कमी है जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, वो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है। एक परिवार के नाम पर आप वोट मांग सकते हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप देखिए लगातार कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं, कहीं ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति सत्ता लेकर चलता है। मुझे लग रहा है कि संगठन की जो ताकत होती है, एक व्यक्ति का जो भरोसा होता है और संघ जमीन स्तर पर जो काम करता है, वो विपक्ष को देखने की बात होती है। और अभी कास्ट सेंसस की बात हो रही थी, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने रोहिणी आयोग का गठन किया था। 15 साल लालू प्रसाद यादव ने बिहार में राज किया, 15 साल नीतीश कुमार हो गए, 2 ओबीसी चीफ मिनिस्टर 30 साल से वहां राज कर रहे थे। क्या ओबीसी का वहां भला हुआ? प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ओबीसी के हर वर्ग को न्याय मिले, सबका उत्थान हो, सर्वजन हितान सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास हो, और सिर्फ 2 या 3 जाति ओबीसी का फायदा न ले, इसलिए रोहिणी आयोग का गठन किया गया। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी गई है। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी जल्दी ही रोहिणी आयोग पर निर्णय लेंगे और हर ओबीसी की कास्ट को न्याय देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की नजर में सबको न्याय देने की इच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को यह बात भारतीय जनता पार्टी से सीखनी चाहिए कि एक कितना भी बड़ा नेता हो, संगठन सर्वोपरि होता है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात के सबसे बड़े सूचक है कि संगठन को साथ के लेके चलते हैं। अगर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से सीख लेती तो कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं होती। बट सर, विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि अभी देखिएगा आप, अभी एक सीएम का फेस आया है, उसके बाद अभी थोड़ी देर रुक जाइए, आपकी इनफाइटिंग दिखने लग जाएगी। He is very confused. No, listen to me. He is very confused because he is not clear. I mean, he has to decide whether you have. भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या कभी-कभी आपको किसी मुख्यमंत्री का चुनाव की लड़ाई दिखी है? 25 सितंबर को जयपुर में क्या हुआ था ये सभी मालूम है। अशोक गहलोत सर लेकिन वसुंधरा राजे जी कोशिश तो करती हुई लग रही है। हर दूसरे दिन उनके घर पे एक एमएलए पहुंच जाते हैं। वसुंधरा राजे ने एक शब्द भी बोला? वसुंधरा नहीं, बिल्कुल सर, सब कुछ राजनीति में सब कुछ बोलना थोड़ी पड़ता है, कुछ तो दिखता भी है, कुछ दिखाया भी जाता है। तो नहीं, लेकिन नहीं, वसुंधरा ने क्या एक शब्द कहा कि मंत्री बनूंगी, पार्टी मेरे नाम पे विचार करे? वसुंधरा ने बहुत स्पष्ट कहा कि पार्टी जो निर्णय लेगी उसके साथ जाऊंगी। तो आपको क्या लगता है कि अब जब यहाँ पर एक ट्राइबल लीडर चुना गया है, तो क्या महिला होने के कारण थोड़ा पलड़ा उनका भारी हो गया है अब? क्योंकि अब यहाँ पे ट्राइबल लीडर आ चुका है। मध्य प्रदेश में मोस्ट लाइकली ओबीसी शिवराज हैं, जो अगर उनको नहीं चुना गया जैसा कि सब कह रहे हैं, तो उनके दूसरे कंटेंडर्स भी ओबीसी ही हैं। आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ के डिसीजन के बाद क्या वसुंधरा राजे के फेवर में कुछ जनता पार्टी के स्केल्स हैव टिल्टेड? बिल्कुल नहीं, नहीं, नॉट एट ऑल। भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह देख के कभी निर्णय नहीं होता कि वो आदिवासी इसलिए उसे मुख्यमंत्री बना दिया है, वो दलित इसलिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सामूहिकता से निर्णय होता है, जो योग्य होता है उसे जिम्मेदारी दी जाती है, जो डिलीवर करना की क्षमता रखता है उसे दी जाती है। राजस्थान के अंदर 115 विधायक है, 115 के 15 विधायक मुख्यमंत्री की बनने की क्षमता रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। ये तो पार्टी का हाईकमान तय करेगा किसे जिम्मेदारी देना है। ऐसा तो होगा नहीं ना कि एक आदमी कांग्रेस के समान। But Shehzad, doesn't that seem slightly duplicitous, because this is exactly the allegation that the BJP levels at the Congress. One, that you take so much time in decision making. Second, that your decisions come from the high command. What are the central observers doing if not acting at the behest of the high command in the BJP? How is what happens in Congress indiscipline and what happens in Congress Sangathan ki Shakti? May I address this? First of all, the Congress party 2018 में राजस्थान में आप देखिए, 2018 में बीजेपी के लिए प्रोग्राम बनाया है क्या? May I answer? नहीं सर, एक्चुअली डिबेट तो हम शुरू कर चुके हैं, बट एवरीबडी वांट्स टू नो हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीएम कैंडिडेट। तो बस लास्ट के 1 मिनट उसके लिए डेडिकेट कर रही हूँ। एक सेकंड, विवेक जी अपनी डिबेट को एनालाइज करेंगी
अच्छा। If you analyze your Let me debate, answer, let me answer. I mean 70% time तो आपने बीजेपी एक सेकंड बीजेपी के कैंडिडेट सीएम बनने वाले, अब मैं क्या कर सकती हूँ? जब रेवंत रेड्डी कैंडिडेट थे सीएम के, आपकी सरकार बनने वाली थी, हमने पूरा डिबेट तेलंगाना पे किया। आप पिछले हफ्ते का भरोसा रखिए, मुझे रिस्पॉन्ड करने दीजिए। 10 सेकंड प्लीज शहजाद, 10 सेकंड। अदरवाइज ही विल अक्यूज मी अगेन ऑफ लेटिंग यू सैबोटेज। आपने कुल सीटें कितनी जीती है 5 राज्यों में, जरा बताइए। आपकी कुल सीटें कितनी है इन 5 राज्यों में? आप इक्वल हिस्सा चाह रहे हो टाइम का, जितनी जिसकी हिस्सेदारी ना, जितनी जिसकी संख्या वाली, इतनी नो बट टाइम्स नाउ, अब मुझे अपनी पूरे बात करनी है। टाइम्स नाउ बिलीव्स इन सबका साथ, टाइम्स नाउ बिलीव्स देयर इज नो, जिसकी जितनी सीटें भारी, संख्या भारी नहीं है, जिसका जितना न्यूज पॉइंट भारी, जो आपने मुझे सवाल पूछा। यस प्लीज, आई विल कम टू विवेक श्रीवास्तव आफ्टर दिस, डोंट वरी। हम कोई पारिवारिक कंपनी नहीं है कि एक लाइन का रेजोल्यूशन भेजा, सीएलपी 2 मिनट में समाप्त। हमारे यहाँ पर सारे विधायक देखिए, मैं यहाँ पे इनका भाषण सुनने आया नहीं हूँ। विवेक जी, अगर डोंट मुझे बुलवाना है, No, it's fine. You made your point. You say I made my point. He's interrupting me before I have Vivek Srivastava, give him 10 He's seconds. always up to this. You'll He get always interrupts. Wait, He Shehzad. has not learnt manners. Arey, please don't make me behave like Speaker of Lok Sabha. Mr. Srivastava, Let me 10 complete. seconds. Let him complete. You'll get uninterrupted time. आप इनको पहले चुप कराइए और पहले मैं बोलूंगा। सर, उनका सवाल खत्म होने दीजिए, आपको uninterrupted time मिलेगा, please. enough time. Yes. Shehzad, make your point, sir, please. बोलेंगे मतलब एंकर विल डिसाइड। Guy, gentlemen, please. देखिए, यही प्रॉब्लम है इनका, इसलिए जेएनयू के कैंटीन तक सीमित है। Shehzad, please make your point. Please make your point. हम कोई पारिवारिक फर्म नहीं है कि वन लाइन का आप पीसीआर वाले भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पारिवारिक फर्म नहीं है कि एक लाइन का रेजोल्यूशन आता है और सीएलपी 2 मिनट में समाप्त। हमने क्लियर कट डिसीजन लिया था कि हम किसी चेहरे के साथ नहीं जा रहे। विधायक असेंबल होंगे, ऑब्जर्वर्स यहां से भेजे जाएंगे दिल्ली से, वो उनकी विधायक की बैठक करेंगे। सुन लीजिए मेरी बात, वो नाम जो सुझाएंगे वो सेंट्रल पार्टी पे आएगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड फाइनली उसको घोषित करेगा। ये हमारी एस्टैब्लिश प्रक्रिया। 10 सेकंड और। इनको 18 दिन लगे थे राजस्थान में 2018 में। प्रियंका वाड्रा वाज डिसाइडिंग हु विल बी द चीफ मिनिस्टर। किस अधिकार से? But if observers are going from the center, then who's deciding? Sorry? If the observers are going from the center, then who's deciding? No, the observers are not going to decide there. Observers are going to ask the legislature party, what is your decision? Yes, Modi ji gets to decide, Amit Shah gets to decide as part of parliamentary board. They don't get to decide because they are son of Indira and son of Nehru. That's not the way our party functions. Our party functions a very institutional manner, very democratic manner. Modi ji and Amit Shah ji have a say because they are part of parliamentary board, just like Nadda ji has. I would have wanted to open the floor for Vivek Srivastava, but he's unfortunately decided to leave. Yes, Nikhil Jain, please. I don't think I need to even respond to that. I don't think I even need to respond to that. The entire country knows what Shehzad is saying right now is absolute blabber. Everybody knows how things are decided in the BJP. Jab Modi and Shah decide, even JP Nadda doesn't get to know what is happening. Let's not pretend that it is the state that are deciding who the chief minister will be. This is the same party that announced MLA tickets, and the MLAs themselves got to know, the candidates themselves got to know only after the list was announced. So let's not pretend make believe that you very well know how your party functions. I know that, Sameer ji knows that, and Priya also knows that, and everybody in the world knows that. And on that one short point, Priya, Sameer ji is not a neutral voice. I am also not a neutral voice. I'll be very honest with that. I'm not a spokesman of anybody, but I'm not a neutral voice. Sir, I am a neutral voice. That is the only thing I can vouch for. That I am a neutral voice. I wanted to give everybody equal opportunity. Unfortunately, Vivek Srivastava is the one who decided to leave. There was no Sankhya Bhari and questions Zada to any particular party. But unfortunately, I've completely run out of... the last people lecturing. No, we really need to move on, Shehzad. We really need to move on. Kamal Nath before, and how did the MLAs tell them? Right, we've completely run out of time. This seems to be a more feisty debate than the discussions inside the closed room meetings that are going to happen. We have one meeting coming up tomorrow in Madhya Pradesh, and the other one, which is going to be the most exciting, perhaps a little bit controversial one, in Rajasthan on Monday. Times Now will be your one-stop shop for the latest information. Thank you, Mr. Chaugakar, for joining us. Shehzad and Nikhil will stay with me. We'll be back in a few minutes.